Hello. जिसको भी ज्वाइन करा दो यार. Very good. So we were talking about DAC, digital to analog converter, and since this is an engineering course, our discussion cannot be complete until we go inside a very simple DAC and see how analog to digital conversion work. That is very important because DACs are integral part of analog ADCs. So DAC is actually used inside an ADC. One of the components of DAC is ADC. Uh, so very famous DAC circuit. ये पक्का तो नहीं है, परमानेंट लग रहा है ये दिन मैंने कहा ना रखा करेंगे. ठीक हो गया. DAC circuit. The most famous one is R-2R. Ladder DAC. CD. R-2R. Ladder DAC. And so what's inside this R2R ladder DAC? Basically, you need very highly accurate R resistance and 2R resistance. So the DAC we have sent you already has those resistances. So we bought, I think, about 1,000 of them, and we very carefully selected only the very accurate ones from those, which took us a long time to actually check what are the most closer to 10K and 5K. So we use 10K and 5K resistance. So that's why the results, as you can see from the audio output, are very uh, clear. It's not a bad 8-bit DAC. It's very good 8-bit DAC. So this is how the DACs are made. So here we go. Let's make another one for a 4-bit DAC. So this is the basic circuit of a uh, R2R ladder DAC. So in order to see it's working, these are the inputs. Here uh, we can apply digital inputs. And this is a analog output.
this current, since this is going to operation amplifier, the current here is almost zero. Because the operation amplifier has very high impedance. Question? Okay, so how does it work? This is MSB and this is LSB. So to see how it works, we have to see what happens when we apply some digital input. For example, if we apply 100 as input, MSB, LSB. तो इसके नीचे कोई चीज रखो उधर उधर से रखो कुछ चीज उसके नीचे रखो. So when we apply 100, this is 1, this is 0, this is 0, this is 0. Which basically means that this is plus 5. Now here we have to talk about voltages because that's how, if we don't talk about voltages, we won't be able to convert analog digital input to analog input. So here, this is here we have to talk about voltages. So when you apply this over here, plus 5, ground, 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 what is the equivalent circuit that you see from here? What is the equivalent circuit that you see? This is ground. So ground means a ground here. So from here, what do you see? 2 are going to ground, 2 are going to ground. So what is the equivalent value of these two? 2R parallel with 2R. Haan bhai Haris. What is 2R parallel with 2R? Haris, are you there? R. 2R parallel with 2R. Haris. हारिस की बात नहीं आ रही. कोई और? हसन रजा. 2R parallel with 2R. सर R. R. Very good. Simple. मैंने कहा थोड़ा आपका सर्किट का देखो कि कुछ याद है आपको. तो 2R parallel with 2R, R. So this is R. R plus R, 2R. So this is 2R. 2R parallel with 2R. चलो जूम कर दो. हाँ बस ठीक. So 2R parallel with 2R. Again this is ground. बड़ा जबरदस्त किसी ने सर्किट बनाया है. बहुत कमाल के छोटे छोटे सर्किट हैं जिन्होंने डबल ई का जो है ना कमाल ही कर दिया. डबल ई को पता नहीं कहां से उठा के कहां पे पहुंचा दिया. मतलब एक तो गालिब की शायरी है ना एक तरफ, छोटे छोटे अल्फाज का चुनाव है जो हम में से कोई भी नहीं कर सकता. 5 लफ्ज उस तरह नहीं हम जोड़ सकते जिस तरह गालिब ने जोड़े हुए हैं. 10 लफ्ज कोई एक शेर उसका सुन लें, दोबारा आप उसे रिपीट नहीं कर सकते जब तक आप उसे याद ना करें. So just like that here, this is electrical poetry, engineering poetry in front of you. कमाल की पोइट्री है ये.
जस्ट अमेजिंग। हर जगह पे आपको ऐसी ऐसी गजलें, ऐसी ऐसी नज़में नजर आती हैं कि यू कैनॉट कंपेयर विद, यू नो, छोटे मोटे शायर इस तरह का मुकाबला कर ही नहीं सकते। सो दिस इज आर, दिस ओवर हेयर इज 2R, 2R parallel with 2R again. This over here is R, R plus R, 2R here. So 2R, so equivalent circle comes out to be, if you start from there, it comes out to be plus 5 volt, 2R resistance, and ये सारी की सारी 2R के बराबर हो गए। All of this is equal to 2R. 2R all parallel with 2R, R plus R, 2R, 2R parallel with 2R, R plus R, 2R, 2R parallel with 2R, R plus R, 2R. So this whole thing over here is equal to 2R. So V out will be how much? What will be the output voltage? Now we don't see, if you look at this, uh, if you want to find impedance from this side, then it is whole of this is equal to R. But you want to find equivalent circuit from the point of view of plus 5 volt. And you want to find out what is V out. So not the driving point impedance in this direction, but we want to find out V out. So V out is this, starting from here, 2R, 2R. Whole of this is equal to 2R, 2R. V out. So what is V out here? क्या किसके बराबर होगी? Sir, 2.5? हाँ, very good. 2.5 volt. Well done. 2.5 volt. So when this is 1, we say the output comes out to be equal to 2.5 volt. तो हम कहते हैं कि इसकी weightage है 2.5 volt. In analog realm or in analog domain, this one is equal to 2.5 volt. Now let's do the second analysis, where we make this equal to plus 5, this equal to ground. And that is equivalent to applying, that is equivalent to applying 0, 1, 0, 0. So now what is the output voltage? That we saw in the beginning of the last lecture, that that comes out to be equal to 1.25 volt. Now if you draw the equivalent circuit over here, starting from this plus 5, you have to look at this circuit. So in plus 5, you have, थोड़ा सा इधर कर लेना है, you have, starting from here, you come across this resistance on the road, 2R. From here, current can go into this direction, which is 2R. So there are two directions over here. One is this one, 2R, and other one goes in this direction. So when the current that goes in this direction comes across this resistance R.
then it comes across this resistance 2R. And this is the voltage that we want to find out, this voltage. So starting from here, you can see that the whole of this wing is equal to 2R. Whole of this branch of the circuit is equal to 2R. But when you go in this direction, the current that goes in this direction faces R and 2R. So 3R in this wing and 2R in this wing. From this goes in this direction and goes in this direction. थोड़ा zoom कर लो उसमें. So that we talked about that in the last lecture, that this comes out to be equal to 1.25 volt. ये मुझे ना कहें कि ये कैसे कैलकुलेशनें करनी है, ये सर्किट का प्रॉब्लम है. यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस. मुझे so this comes out to be equal to 1.25 volt. सिमिलरली अगर मैं सिर्फ इसको 1 करूं, बाकी तीनों को 0 कर दूं, चलो एक को 1 करूं, बाकी तीनों को 0 कर दूं, so this output comes out to be equal to 0.625. If the resistances are ideal and they are very accurate, this is what you get. And if I just do this MSB1, वो जरा कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं है. That will need some circuit analysis to do, but that should be able. You should be able to do this, and this comes out to be good 0.3125 volt. So every bit has a voltage over here, which goes from half होती जाती है. So the question is कि what happens if you apply 2 ones over here? अगर मैं ये apply करूंगा तो क्या output होगी? ये apply करूंगा तो क्या output होगी? हाँ भाई, कोई बताएगा? नीचे ईमान, ईमान, are you there? ईमान, हुदा. यार मुझे लग रहा है ये लोग ना वीडियो ऑफ करके और माइक म्यूट करके चाय चाय पी रहे होते हैं बैठ के, या अम्मी से गप्पे शप्पे लगा रहे होते हैं, मुझे लगता है. हुदा, नो वन देयर. सर आपको आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है आवाज. सो चले, कोई तो बैठा हुआ है यहाँ पे, बाकी तो सब लोग लगता है दाएं बाएं हो गए. हुदा, व्हाट विल द आउटपुट इन दिस केस? I think 2.5 plus 1.25. 2.5 plus 1.25, which is the weightage sum of these two inputs. ये कौन सा लॉ लगा है इसमें? चलो आप देखते हैं कि आपकी कितनी लाइक है. ये सर्किट का कौन सा लॉ है? सर्किट के थ्योरम होते हैं ना, ये कौन सा थ्योरम है? Yeah. There's superposition. वो वेरी गुड, सुपरपोजिशन थ्योरम. The voltage at any one point of the circuit is equal to the sum of voltages, making one equal to one, एक voltage को रहने दें and make the other all other voltage sources ground, plus activate one of the other voltage source and make all other ground. So that's basic superposition theorem. So this is
the most interesting application that I have found of the superposition theorem कि अगर एक से ये वोल्टेज आ रही है तो दो वोल्टेज सोर्स लगाएंगे तो ये वोल्टेज आ जाएगी. So very good. So that is superposition theorem. So that's the theory behind uh, inside DAC. So I think we had enough of DAC. We need to move on to the next topic that is part of our next lab. So before you have a uh, excuse to uh, you know come after me कि सर आपने कोर्स तो पढ़ाया नहीं है, थ्योरी पढ़ाई नहीं, लैब पहले ही हो गई है. So let's go to the little bit of theory in this lecture and the next lecture. And the topic is the most important. ये topic आपको काफी अर्से तक तंग करेगा. Before I go there, मारिया कोई क्लास का क्विज कब है? मारिया मारिया भी लगता है आज गई नहीं है कहीं. और कौन है? Okay, so maybe we'll have a quiz this week or नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. कोई क्विज करना जरूरी है क्योंकि अभी हमने 5-6 या जितने भी क्विज करने हैं पूरे वो हमें करने पड़ेंगे. So next topic is about timers. So as I talked about, timers are integral part of any processor, any computer in the world, be it the desktop computer, anything, any embedded computer, anybody, timers are there. So basically, the timer is a counter. Which is resettable, loadable, parallel loadable, parallel loadable, और क्या होगा? Clock frequency it can also be set through the software. So clock frequency can be set by software. Can be 8-bit or 16-bit. That's the counter का मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि काउंटर इसमें क्या है. कि काउंटर रीसेटेबल है, पैरेलल लोडेबल है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, कैन बी सेट. इसकी क्लॉक भी सेट हो सकती है सॉफ्टवेयर में. ये 8-बिट भी हो सकता है, 16-बिट भी हो सकता है. और ये कि जब ये ओवरफ्लो करता है व्हेन इट ओवरफ्लोज, इसकी आउटपुट कोई ना कोई 1 हो जाती है.
So that is called a flag. In most places, you call it a flag. So this is a resettable parallel loadable counter. सर Right? हाँ जी, पूछे पूछे। सर आप क्या कह रहे थे, ओवरफ्लो होता है तो क्या आउटपुट हो जाती है? ये बताने लगा हूं। तो ये इसकी आउटपुट है, n बिट, n कैन बी 8 और 16 आउटपुट। ये काउंटर है एंड एक और चीज है कि इसकी क्लॉक को स्टार्ट स्टॉप भी किया जा सकता है। क्लॉक कैन स्टार्ट और स्टॉप। व्हेन द क्लॉक स्टार्ट करते हैं तो ये क्लॉक काउंटिंग करना शुरू कर देता है। व्हेन इट रीचेज टू मैक्सिमम, काउंटर कब ओवरफ्लो होता है? जब ये पूरा एफ तक रीडिंग हो जाती है उसकी। इन केस ऑफ 8 बिट एफ, इन केस ऑफ 16 बिट एफ ऑल वंस, देन इट गोज बैक टू 0 0 0। तो उसको इसकी जो सी आउट है, जो हर काउंटर की एक और सी आउट होती है ना, जो हम कैस्केडिंग के लिए अगले काउंटर में यूज करते थे, ये सी आउट जो है वो 1 हो जाती है। और वो जो है वो बेसिकली एक डी फ्लिप फ्लॉप में सेव हो जाती है। डी फ्लिप फ्लॉप को भी क्लॉक जा रही होती है। इसको रीसेट भी कर सकते हैं और इसको पैरेलल लोड भी कर सकते हैं। इसकी आउटपुट भी किसी टाइम पे रीड कर सकते हैं हम। तो डी सर फ्लिप फ्लॉप में इसको कहते हैं, फिर फ्लैग कह देते हैं इसको, फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग। सर क्वेश्चन? सर दोनों की क्लॉक डिफरेंट भी हो सकती है या सेम ही होती है? ये वाली क्लॉक यस सर, दोनों की काउंटर की सेम, और इसकी इसकी डी दोनों की फ्लिप सेम फ्लॉप की। होती है, दोनों की सेम होती है। मैं ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। ये आउटपुट एक दफा सेट हो जाती है तो फर्दर क्लॉक जो है ना, इस काउंटर की क्लॉक, वो इस क्लॉक को कुछ नहीं कर सकती, वो इसको डिसेबल नहीं करती, ये फ्लैग रहता है। इस फ्लैग को अगर आपने करना है तो उसको आपको रीसेट करना पड़ता है, फ्लैग को। इस डी फ्लिप फ्लॉप को आपको रीसेट करना पड़ता है, या क्लियर जिसे कहते हैं, या रीसेट करना पड़ता है ताकि इसकी आउटपुट 0 हो जाए दोबारा। वरना जाए ये एक दफा 1 हो जाए, ये 1 ही रहती है। तो ये इसकी क्लॉक है। अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं कि क्लॉक का सर्किट पहले देखते हैं कि कैसे चलता है। जूम कर देना थोड़ा। सिस्टम की क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जो है, ये आपकी क्रिस्टल होती है, उसको ये डिवाइड बाय 4 करता है प्रोसेसर। पता नहीं डिवाइड बाय 4 कैसे करते हैं हम, डिवाइड बाय 2 कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 4 कैसे करते हैं? कुछ याद है? क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, उसको डिवाइड बाय 4 कैसे करेंगे? सर आई थिंक दो
दो फ्लिप फ्लॉप्स होते थे उसमें। दो फ्लिप फ्लॉप लगेंगे ना, एक फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जब टॉगल करेगी तो डिवाइड बाय 2 होगी, उसकी आउटपुट दूसरे फ्लिप फ्लॉप को देंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 4 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 4। 4। तो ये डिवाइड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 4 का कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन है कि ये अगर आपके पास है फ्लिप फ्लॉप डी फ्लिप फ्लॉप और इसकी ये वाली क्यू डैश आउटपुट मैं इनपुट पे लगा दूं तो इधर से क्लॉक दे दूं, अगर मैं जब स्टार्ट करता हूं ये आउटपुट 1 होगी तो ये क्या होगी? 0। 0 इधर आएगा, अगली क्लॉक पे ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी? 1। तो इस क्लॉक के हर एज के ऊपर, इस क्लॉक के हर एज के ऊपर पहले अगर 1 थी तो अगले एज पे ये हो जाएगी 0, अगले एज पे हो जाएगी 1, अगले एज पे हो जाएगी 0, अगले एज पे हो जाएगी 1, अगले एज पे हो जाएगी 0, राइजिंग एज पे। तो एज यू कैन सी हियर कि ये वाला फ्लिप फ्लॉप इस क्लॉक की एज पे ऑपरेट करेगा, राइजिंग एज पे। सिंस द आउटपुट कैन ओनली चेंज आफ्टर ए राइजिंग एज, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना इससे डबल से कम नहीं हो सकती, इसकी हमेशा फ्रीक्वेंसी डबल से ज्यादा ही रहेगी। तो इन दिस केस अगर मैं ये डायरेक्ट लगा दूं तो ये डबल फ्रीक्वेंसी वाला, तो दिस फ्रीक्वेंसी इज डिवाइड बाय 2 ऑफ दिस। ये क्लॉक है आपकी, ये क्यू आउटपुट है विच इज डिवाइडेड बाय 2। यही आउटपुट अगर मैं किसी और फ्लिप फ्लॉप को दे दूं एज ए क्लॉक, तो उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी? डिवाइड बाय 4। सो बेसिकली दो फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे लगे हुए हैं जिसकी ये क्रिस्टल की इनपुट जो है वो इन दो फ्लिप फ्लॉप को जा रही है, एंड आउटपुट इज व्हाट इज कॉल्ड सिस्टम क्लॉक। इससे कम फ्रीक्वेंसी पे, इस फ्रीक्वेंसी पे प्रोसेसर चलता है। प्रोसेसर जो है ना एक एक इंस्ट्रक्शन जो है वो सिस्टम क्लॉक के ऊपर ऑपरेट करता है। इसकी वजह मुझे नहीं पता कि क्या है, कि क्यों इतना करता है। या यूं समझ लें कि मैं जरा थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है कि पाइपलाइन प्रोसेसर को क्लॉक के डिफरेंट फेजेस चाहिए होते हैं, तो वो इसलिए डिवाइड बाय 4 करते हैं इसको। तो सिस्टम क्लॉक जो है डिवाइड बाय 4 बन जाती है। तो अगर आपने 4 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल लगाई हुई है तो सिस्टम क्लॉक क्या होगी? 1 मेगाहर्ट्ज। अगर आपने 8 मेगाहर्ट्ज की क्रिस्टल लगाई हुई है तो आपकी सिस्टम क्लॉक होगी 2 मेगाहर्ट्ज। तो आपका कोई भी काउंटर भी जो है वो 2 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट नहीं कर सकता। तो सिस्टम क्लॉक डिटरमाइंस द मैक्सिमम क्लॉक। अब इसी क्लॉक को लेके 8 बिट काउंटर को दे देते हैं। याद रखें काउंटर क्या है? काउंटर यही है, एक डी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट दूसरे के क्लॉक पे गई हुई है, दूसरे की आउटपुट दूसरे के क्लॉक पे गई हुई है, तो ये आउटपुट 8 बिट काउंटर को दे देते हैं। तो ये वाली आउटपुट क्या होगी? 8 बिट काउंटर की D0 क्या होगी? एनीवन? डिवाइड बाय 2। तो अगर हमने स्टार्टेड फ्रॉम 4 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल, this system clock will be 1 megahertz, this will be 500 kilohertz, this will be further divided by 2, D1 will be divided by 2, 4, this will be D2 will be equal to divided by 8। तो zoom करना यार इसको, इधर कर। So and this will be divided by 16,
divide by 32 and so on, divide by 255 6. तो ये चलता जाएगा until we get to divide by 256. अब ये काउंटर जो है ना, बाकी चीजें तो बाद में आती हैं, एक काउंटर का एक अपना एक कंट्रोल रजिस्टर होता है। कंट्रोल रजिस्टर, इसमें जो आप डाटा राइट करते हैं वो पोर्ट पे नहीं जाता। इसमें जो भी डाटा राइट करते हैं इसका भी एक एड्रेस है, ये भी एक पोर्ट है। कंट्रोल रजिस्टर ऑफ टाइमर, कंट्रोल ऑफ टाइमर। तो ये वाला कंट्रोल जो है ये डिसाइड करता है कि इस टाइमर ने कैसे बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक आउटपुट होती है, वो होती है PSA, प्री स्केलर PSA, प्री स्केलर एक्टिवेटेड और नॉट। और वो किधर जाती है, वो बाद में बताता हूँ, ठहरें एक मिनट। प्री स्केलर की आउटपुट क्या है, ये सारी 8 की 8 आउटपुट जो है वो कहां जाएंगी, वो जाती है 8 to 1 मक्स, 8 to 1 मक्स, 8 आउटपुट। इस अगर 8 to 1 मक्स हो तो उसकी सिलेक्ट लाइंस कितनी होंगी? सर 3। हाँ 3, वेरी गुड, 3 सिलेक्ट लाइंस। तो इसकी 3 सिलेक्ट लाइंस होती हैं यहां पे। अगर ये सिलेक्ट लाइन मैंने इस रजिस्टर में ये सर यस, सर ये PSA से रिपीट कर देंगे, होता क्या है? ये बाद में बताता हूँ, अभी वो मैंने कहा ना, अभी वो बाद में बताता हूँ, अभी बताता हूँ। पहले ये बताते हैं कि ये इसकी सिलेक्ट लाइन है S0, S1, S2। तो ये 3 इसकी आउटपुट्स हैं, बिट 0, बिट 1, बिट 2। जब मैं इनमें डाटा राइट करता हूं, जो यहाँ पे वैल्यू राइट करेगा वो डिटरमाइन करेगा कि यहाँ पे कौन सी क्लॉक आएगी। याद है मल्टीप्लेक्सर सिलेक्टर होता है, सिलेक्ट करता है। अगर यहाँ पे मैं 0 0 0 दे दूंगा तो डिवाइड बाय 2 क्लॉक यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। अगर मैं इसको 4 दूंगा तो डिवाइड बाय 4, 1 दूंगा तो डिवाइड बाय 4 यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। अगर सारे 1 दूंगा 1 1 1, तो यहाँ पे जो क्लॉक होगी कि वो क्या होगी, डिवाइड बाय 256। So using 8 to 1 multiplexer, I can select any clock I want. तो याद रखें 0 0 means divide by 2। डिवाइड बाय 1 कैसे मिलता है, उसके लिए ये PSA यूज होती है कि यहाँ पे एक और 2 to 1 मक्स होता है। ये PSA is coming from here. If PSA is 0, what will be the output? If PSA is 0, what will be the output? सर 1 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक होगी। हाँ, उस वक्त ये सारा बाईपास हो जाएगा, प्री स्केलर विल नॉट बी एक्टिवेटेड, सो डायरेक्ट 1 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक यहाँ पे आ जाएगी। अगर PSA 1 है फिर ये सर्किट एक्टिवेट होगा, फिर ये तीनों मैटर करेंगे कि ये यहाँ पे हमने क्या स्टोर किया हुआ है। इफ दिस इज 0 0 0, ये डिवाइड बाय 2 होगी,
तो अगर इसको 1 कर देते हैं, फर्दर सिलेक्शन दी हुई है वो इसलिए कि डिवाइड बाय 9 9 to 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना था उन्होंने बेसिकली, ताकि डिवाइड बाय 1 भी हो जाए, डिवाइड बाय 2 भी हो जाए, अप टू डिवाइड बाय 8 हो जाए। तो 9 to 1 मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए जाहिर है फिर ये दो फ्लिप फ्लॉप उनको लगाने पड़े। एक एक ये वाला फ्लिप फ्लॉप है, ये पीएसए से सिलेक्ट होता है कि 0 करेंगे तो विदाउट एनी प्री स्केलर मैक्सिमम क्लॉक चली जाएगी। अगर प्री स्केलर इसको 1 करेंगे तो प्री स्केलर एक्टिवेट हो जाएगा और इनमें से कोई एक क्लॉक जाएगी। और इसमें एक यहाँ पे भी जो इसकी बिट 7 होती है, इसकी टाइमर कंट्रोल की बिट 7, वो क्या करती है, वो यहाँ पे एक एंड गेट लगा होता है। आई होप यू कैन सी दिस एंड गेट। अगर ये एंड गेट की आउटपुट 0 हो जाएगी तो क्या होगा, अगर ये 0 हो जाएगी तो क्या होगा, एंड गेट की इनपुट अगर 0 होगी तो क्या होगा। दिस एंड गेट, अगर इस एंड गेट की इनपुट 0 की होगी तो क्या होगा, फाइनल आउटपुट यहां से आ रही है फाइनल। अगर ये एंड गेट की आउटपुट इनपुट एक एंड गेट की इनपुट 0 कर दें तो क्या होता है, हसन हबीब, आर यू देयर। यस सर, आउटपुट 0 हो जाएगी तो इससे क्या होगा, सर, फ्रीक्वेंसी भी 0 हो जाएगी जो क्लॉक इससे है क्या, इससे काउंटर को क्या होगा, सर, वो रुक जाएगा। स्टॉप हो जाएगा ना, काउंटर स्टॉप हो जाएगा, काउंटिंग जी बंद कर देगा। और अगर इसको 1 करेंगे तो क्या होगा, सर, जो फ्रीक्वेंसी हमने सिलेक्ट की होगी उसके साथ उसकी वो क्लॉक चलनी शुरू हो जाएगी। वेरी गुड यार, आप लाइक हैं, बहुत अच्छा है, आप लाइक हैं, वेल डन। तो ये बिट 7 जो है ना, ये भी कंट्रोल करती है टाइमर स्टार्ट करना है, कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है। तो बेसिकली इससे ये है कि आप पहले सारा कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, इन सारी बिटों को आप लहदा सेट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, मैं कह सकता हूं टाइमर, इधर करना, थोड़ा जूम करना, टाइमर, काफी सारे टाइमर हैं, टाइमर ये कैपिटल में यूज होगा, टाइमर 0 डॉट बिट 7 भी लिख सकता हूं मैं, लेकिन कहीं डिफाइन हुआ है हैश डिफाइन, कहीं पे हुआ हैश डिफाइन टाइमर 0 ऑन इक्वल टू 7। तो कहीं ना कहीं ये हैश डिफाइन जो आपका प्रोसेसर है उसकी अंदर कहीं ये डिफाइन हुआ है कि टाइमर 0 ऑन इज इक्वल टू 7 के बिट 7। तो यहां पे मैं टाइमर 0 ऑन जब लिखूंगा तो क्या होगा, टाइमर 0 ऑन, तो क्या होगा, ये जब हैश डिफाइन से जब कंपाइलर इसको कंपाइल करेगा ना, तो जहां जहां पे हैश डिफाइन कोई चीज वैल्यू आती है उसको डायरेक्ट कट एंड पेस्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज जब कट एंड पेस्ट होगी तो ये ऑटोमेटिकली टाइमर 0 डॉट बिट 7 बन जाएगी।
तो इसको मैं अगर 1 कर दूं तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है, इसको अगर मैं 0 कर दूं तो टाइमर स्टॉप हो जाता है। इसी तरह मैं ये सारी बिट्स को सेट कर सकता हूँ। और भी बिट्स हैं थोड़ी सी ज्यादा, उनमें इंपॉर्टेंट जो फंडामेंटल चीज थी वही थी कि ये फ्रीक्वेंसी क्या करती है और कैसे इसको आप कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं। क्लॉक का कंस्ट्रक्ट जो है ये मेरा नहीं क्या उसमें दिया होगा, आपको मिलेगा, पूरे पेज का क्लॉक का सर्किट है। सो दैट्स हाउ द क्लॉक वर्क्स। तो व्हाट इज नाउ दैट वी नो कि ये क्लॉक कैसे काम करती है और हाउ इट वर्क्स विद दिस, तो आपको लैब में थोड़ा सा इसकी आसानी हो जाएगी कि किस तरह से टाइमर का, टाइमर कौन, मेरा ख्याल यहाँ पे आना चाहिए था टाइमर 0 कौन। कंट्रोल, ये एक खास पोर्ट है, ये इसका भी, ये भी एक किसी एक पोर्ट एड्रेस से रिप्लेस हो जाती है। जैसे पोर्ट बी है, पोर्ट सी है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, इससे आप रीड नहीं कर सकते, इस पे सिर्फ राइट ही कर सकते हैं क्योंकि ये कंट्रोल पोर्ट है। टाइमर की कंट्रोल पोर्ट जो है दैट विल बी अ रीड राइट पोर्ट। सो this is the processor inside your microcontroller, and this is the timer which is outside. ये अलहदा से बंदा है या काउंटर, इसके प्रोसेसर से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोसेसर इसकी कंट्रोल पोर्ट पे राइट कर सकता है, इसको पैरेलल लोड कर सकता है। अगर तो ये 8 बिट का टाइमर है तो वो एक हो जाएगा टाइमर 0 हाई, जो भी वैल्यू आप रखेंगे वो इसमें लोड हो जाएगी, और टाइमर 0 लो, इसमें जो भी वैल्यू आप रखेंगे वो इसमें लोड। यहाँ पे मैं 0x डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं 0x डाल देता हूँ, तो यहां से ये स्टार्ट करेगा काउंट करना। तो इसमें लोड, अगर 16 बिट का टाइमर है तो इसमें बी लोड हो जाएगा। लेकिन आप स्टार्ट करने से, टाइमर को स्टार्ट करने से पहले इसकी प्री लोड वैल्यू दे देते हैं। तो ये भी एक अलग पोर्ट है टाइमर की, ये भी एक अलग पोर्ट है टाइमर की। कंट्रोल पोर्ट एक अलग पोर्ट है टाइमर की, जिसे आप इसको कंट्रोल करते हैं, इसको ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ये इसकी अलग पोर्ट है। ये इसकी टाइमर हाई एक अलग रजिस्टर है, टाइमर लो एक इसका अलग रजिस्टर है, उससे जो वैल्यू लोड करते हैं वो इसमें पैरेलल लोड हो जाती हैं। तो ये टाइमर के अंदर ये सारी हार्डवेयर इसके साथ अटैच्ड है। इसकी आउटपुट भी आप रीड कर सकते हैं, 8 बिट की ये है लो, टाइमर लो, ये रीडेबल पोर्ट भी है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। कोई करता नहीं है क्योंकि व्हाट यू डू इज, आई टेल यू व्हाई, क्यों नहीं करता। तो टाइमर का पहले बात तो ये कि काउंटर जो है इसका फिर यूज क्या है टाइमर का। टाइमर का यूज ये कि व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू टेल हिम कि यार ये तुम टाइम जो है ना इसको कहते हैं आपके काउंट करो, और जब पर्टिकुलर काउंट हो जाए तो मुझे बता दो। इससे मुझे एक लतीफा याद आ रहा है, या पर्सनल जाती मतलब के वाकई सुन समझ लें, एक जाती वाकया याद आ रहा है कि होता है ना कि आप वो छुपन छुपाई खेलते थे,
तो उसमें एक बंदे को कहते हैं कि जाओ 100 तक गिनती गिनो। क्यों कहते हैं उसको 100 तक गिनती गिनो? डिले क्रिएट करने के लिए, एक पर्टिकुलर डिले क्रिएट करने के लिए, उतनी देर में सब लोग छुप जाए। तो एक दिन मैं वो घर में खिड़की के पास बैठा हुआ था, तो साथ ही कोई बच्चा काउंटिंग कर रहा था, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 100 होने पे वो कहता आ जावा। तो मैं बारीक सी बात से कहता था नहीं। तो वो समझता था अभी सारे लोगों की डिले कंप्लीट नहीं हुई, वो दोबारा 100 तक गिनती शुरू कर देता था। फिर जब पूछता था 100 के बाद आ जावा, तो फिर मैं बारीक सी आवाज में कह देता था नहीं। वो काफी देर ये सीन चलता रहा। तो फिर उनको पता लग गया कि ये हमारी गेम जो है ना, नहीं इस घर में से आवाज आ रही है। हाँ, वो सारी गेम का सत्यानाश मैंने कर दिया। फिर उन्होंने काफी मेरी खिड़की पे पत्थर वगैरह मारे उन बच्चों ने, खैर, बट दैट वाज समथिंग। सो तो वो वहां पे काउंटर की एक क्लियर एग्जांपल मिलती है। यू गेट अ वेरी क्लीन एग्जांपल हाउ काउंटर इज यूज्ड इन creating a delay. So if the person is counting every number in 0.5 second, then the total time you get after 100 count will be exactly 50 seconds. So if you want to generate a time, particular time, first of all, you need to see what is the time period of this clock that you're giving to the counter. If the timer clock over here, this final clock, if this time you make it to exactly depending on the crystal, you can calculate कि ये क्लॉक किसके बराबर होगी। अगर मैं डिवाइड बाय 2 यूज करूं, डिवाइड बाय 4 करूं, या 8 करूं, या 16 करूं, आई कैन गेट अ वैल्यू वेरी क्लोज टू, फॉर एग्जांपल आई गेट a clock time of 1 millisecond, which is equal to 1 kilohertz frequency. Then I know that this counter is giving me ये इतने से गज के साथ टाइम को मेजर करेगा। 1 मिलीसेकंड का एक गज है, यॉर्ड स्टिक है, उससे ये काउंटर मेजर करे। और मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत माइक्रो प्रोसेसर को। आप इसे कह देते हैं कि भाई इतने सेकंड काउंट करो, इतने मिली सेकंड, व्हेन द काउंट इज ओवर टेल मी, आई एम डूइंग समथिंग एल्स इन द मीन टाइम। सो दैट मेक्स दिस टाइमर वेरी वेरी हाईली पावरफुल। इंडस्ट्री में टाइमर का बड़ा रोल है कि आपने कोई वाल्व खोलना है, तो आप नहीं चाहते कि सॉफ्टवेयर में कोई इसको कंट्रोल करें, आप चाहते हैं कि हाईली एक्यूरेट हो। कोई वाल्व खोलना है जिसमें किसी टैंकी में, किसी बोतल में पेप्सी डालनी है, तो वाल्व एक पर्टिकुलर टाइम के लिए खुलेगा। बोतल फुल हो जाएगी, बोतल आगे मूव करेगी, अगली बोतल विल कम अंडर द वाल्व और द टैप। पेप्सी का जो टैप है, इट विल कम अंडर द टैप, वाल्व खुलेगा, एग्जैक्टली पर्टिकुलर टाइम का वो भर जाएगी। अब वो वहां पे कोई आप बंदा तो नहीं रख सकते कि यार इतनी देर के लिए खोलो, इतनी देर के लिए बंद करो। So you need something. So every step of the way in the industry, you need a timer to measure the time. मतलब अगर किसी बॉयलर को यूज कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, तो थोड़ी देर अगर बॉयलर की क्लीनिंग करते हैं, किसी और चीज को बॉयल करना है आपने, तो एक पूरा एक टाइम स्टेप होते हैं कि इतनी देर इसमें पानी गुजारेंगे, इतनी देर इसमें फिर हवा गुजारेंगे, फिर इतनी देर इसमें पानी गुजारेंगे। सो एवरीथिंग इज टाइम्ड। प्रीवियसली वो टाइमर सेट करते थे मैकेनिकल, और वो इंडस्ट्री लेवल का जो मैकेनिकल टाइमर था, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। उसको वो सेट कर देते थे 1 घंटे के बाद, तो बैठ के देखते रहते थे कब उसकी बेल बजेगी। So when the bell is on, only then you know okay that there is the 1 घंटा हो गया। फिर आप छोटे को कहते हैं जाओ यार भाग के जाओ, बेल बज रही है टाइमर की, वाल्व बंद करो और दोबारा टाइमर सेट करके आ जाओ। सो दीज थिंग्स, छोटे की सारी जो थी ना यूज, छोटा जो था उसका यूज इन टाइमर्स ने खत्म कर दिया। सो इंडस्ट्रियल लेवल पे आपके पास बेशुमार टाइमर्स मिल जाते हैं।
and using those timers you can control. So timer is basically someone who can give you precise time. इसको कहते हैं टाइमर को कि 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 10 दिन के बाद, साल के बाद, 1 मिलीसेकंड के बाद, 10 मिलीसेकंड के बाद, you can adjust this timer to wake you up if you are asleep. अगर आप सो रहे हैं, it will wake you up after a particular time. कि भाई मैंने जो तुम्हें कहा था, मुझे एक सेपरेट बंदे हैं. माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर cannot do all the stuff. You will notice that it will have many people around him doing work for him. All processor has to do is to give couple of commands in 3-4 lines, and then just the processor is done. The rest of the job is done by a timer. Timer is powerful microprocessor. अगर आप इसको सॉफ्टवेयर में चलाएंगे तो ये तो कभी एक्यूरेसी इसकी प्रॉब्लमेटिक रहेगी. So by setting up the timer, the first step is to step up the setup using crystal to find out कि किस तरह से timer को set up करना है. That we'll see in the next lecture, and then we let go the timer. When the timer overflows, it gives the flag is set. So in our own convenience, we can check when the flag is set. If the flag is set, we can do something. So that is the part of the timer. So I think that's enough for today. So we'll use timer ke beshmar uses. We'll talk about those uses in the next class. The basic idea of the timer is a device that measures time for you, for a separate device that measures time for you. And it's very powerful. All the embedded applications need to have time measured. Real-time applications are cannot work without timer. And if any application that needs accurate time, that application is a real-time application. Any application that needs real time along with all the calculations, all the benchmarks, all the stoppage point of the program, it needs time to go along with this. अगर आपने पैकेट भेजना है नेट पे, तो आप कहते हैं किसी डिवाइस को कहते हैं पैकेट भेजो, वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर वो रिस्पॉन्ड करती है कि हाँ मैंने भेज दिया. अगर वो टाइम में रिस्पॉन्ड नहीं करती, दैट इज नॉट अ रियल टाइम सिस्टम. A real-time system, every device has a timer attached. Within that timer, it has to respond. So if you have all the devices that obey within certain time, then we say that that is a system that is a real-time system. Okay, so traffic light is a good real-time system application where the time is very critical, very important, and that is real time, इंसानों का time. ये कोई 11.059 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक नहीं है, उसकी क्लॉक सेकंड्स की क्लॉक है जो इंसान यूज करते हैं अपनी जिंदगी. So whenever we talk about a clock which is related to human beings, that is called real time clock. वैसे सिस्टम की क्लॉक प्रोसेसर की कोई भी हो, मेगाहर्ट्ज हो, गीगाहर्ट्ज हो, और वो चेंज भी होती रहती है. प्रोसेसर स्लो हो जाता है जब उसके पास काम ना हो, ज्यादा हो जाती है स्पीड जब काम ज्यादा हो. और रियल टाइम क्लॉक डजंट चेंज. वो सेकंड जल्दी नहीं गुजारेगी. It will remain fixed. Okay, so that's end of today's lecture. Thank you very much, Maria. Can we stop here, Maria?